screen. 1 second. Okay. So just give me a second. I'll share the screen. Share. Yes. Hope it is clear. Yes, Okay. Okay. Kindly mute yourself, and wherever you are having any query or something, you can drop in a message. In the end, anyways, we have a discussion. At that time, we can unmute yourself and ask the questions. Okay? Yes. So हमने अभी तक plant mineral nutrition कर लिया है. And today we are going to start soil. Soils again is common for ADO and HDO. As you can see here, ये ADO, sorry. ये ADO का syllabus है. And this is of HDO syllabus soil science. So accordingly we'll be covering first जो दोनों के लिए कॉमन है वो पूरा कवर करेंगे. जो एक्स्ट्रा है दैट आई टेक फॉर HDO एक्सक्लूसिवली. वैसा कुछ है नहीं क्योंकि सब कुछ तो सेम ही है मोस्टली. ओके. एंड यस, सब तो सेम ही है एक्सेप्ट ये सॉइल टेक्सचर इवैल्यूएशन मेथड्स एंड एनालिसिस जो इसमें बिल्कुल भी नहीं है. ओके. एंड ये जो आप देख रहे हो डिटेल्स ऑफ सॉइल प्रोफाइल, लैंड कैपेबिलिटी, क्लासिफिकेशन, सॉइल सर्वे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा एडीओ के लिए क्योंकि वहां पे सॉइल सेंसस में ये कंपलसरी है. दो दे हैवंट मेंशन बट यस यहाँ प्रॉपर्टीज ये सब सॉइल कॉन्सेप्ट्स ये सब जहाँ पे है देयर यू हैव टू गो थ्रू दिस इनवेरिएबली. सो दोनों का ऑलमोस्ट 99% कॉमन है. So all that will be covering in this. So here we'll be covering about soil taxonomy, classification of soils in India. We'll look at soil erosion and types of soil erosion, soil conservation measures, components of soil, properties of soil, etc. So the first thing that we'll do is before starting, we'll start with some definitions. Okay. There are three major definitions that you should remember when it comes to soil. Okay. One, petrology. Petrology का मतलब है scientific study of rocks that deals with their composition, texture and structure, their occurrence and distribution, their origin in relation to physiochemical conditions and geologic process. Simple study of rocks. Okay. And वो उसके rocks के क्या composition है, all that come into that. So petrology, one thing that you need to remember. Next is pedology. Now pedology, it is a Greek word. Again, pedos means soil, logos means study. ये है, it is a study of soil as a natural body and does not focus on the soil's immediate or practical use. So यहाँ पे the origin of soil, its classification, its description, all would be studied. So whenever we talk about any pedologist, pedologist मतलब वो सिर्फ soil को study कर रहा है. ऐसा नहीं कि soil और plants को मिला के कर रहा है. That would be edaphology. एडाफोलॉजी में क्या है, इट इज अ स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट्स. मतलब सॉइल के प्रॉपर्टीज क्या है इन रिलेशन टू द प्लांट ग्रोथ. ओके. सो एडाफोलॉजिस्ट एंड पेडोलॉजिस्ट में बहुत फर्क है एंड दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है. नेक्स्ट कम्स टू मोर टर्म्स दैट इज पेडॉन एंड पॉलीपेडॉन. पेडॉन मतलब वो है स्मॉलेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सॉइल. It's a real natural soil volume just large enough to show all the soil horizons. ये हो गया आपका पेडॉन. इसमें सारे soil horizons वो सब आप देख सकते हो and their relationship among themselves. So that would be called as pedon. And polypedon मतलब contiguous. That is a contiguous similar pedons bonded on all sides by not soil or by pedons of unlike characters. Same characters वाले pedons अब रहेंगे. That would be called as polypedon. एंड ये 1 स्क्वायर किलोमीटर तक एंड मिनिमम एरिया ऑफ मोर देन 1 स्क्वायर किलोमीटर इसमें आता है. एंड अनस्पेसिफाइड मैक्सिमम एरिया यू कैन कॉल इट एज पॉलीपेडॉन टिल द टाइम ऑल साइड्स वुड बी ऑफ सेम पेडॉन. वहां तक वी कैन कॉल इट एज ए पॉलीपेडॉन. सो ये हो गए दो टर्म्स. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स. नाउ कल भी मैंने आई मीन वाइल गोइंग थ्रू द क्लासेस ना पीएम एंड जो प्लांट मिनरल न्यूट्रिशन का जब हम लोग कर रहे थे उसमें मैंने एक चीज आपको बताई थी दैट पेरेंट मटेरियल. ओके. द
characteristic features of the soil that is formed, that would be dependent on the kind of parent material from which that soil has been derived, right? ये मैंने बोला था. So here when we talk about the genesis of soil आप देखेंगे, ओके उसमें द फर्स्ट थिंग वुड बी पेरेंट मटेरियल, दैट इज द रॉक, जो भी रॉक वो जो भी है, दैट विल ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर रॉक्स एंड दिस वुड बी कॉल्ड एज रेगोलिथ. Okay, now this regolith further breaks down to form soil minerals. Okay, soil minerals क्या है? Sand. Sand further breaks down to silt. Silt further breaks down to clay. ओके एंड इसमें व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल, ये सॉइल मिनरल्स हो गए. इट कैन बी एनी सैंड, सैंड टू सिल, सिल टू क्ले, कभी मिक्सचर हो सकता है, कभी इंडिविजुअली भी हो सकता है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सॉइल, सॉइल मतलब सिर्फ ये सैंड सिल्ट या क्ले नहीं है. सॉइल मतलब सैंड और सिल्ट और clay plus organic matter plus soil water plus soil air, all this combined you can call it as soil, as you can see here. Okay, generally हमारे I mean आप तो BS एग्रीकल्चर ये सब पढ़े हो, so you must be knowing all this, but still this is what is composed. Now when we talk about the genesis of soil, there are various factors that affect or that has what you'll say affect, these factors affect the soil formation. So when we talk about soil formation as such, it has five major factors that affect the formation of soil, and this has been given by SS Dokichev, and he is one of the those scientists who has for the first time attempted the classification of soil. इन्होंने पहली बार अपना classification of soil उन्होंने attempt किया था. He is a Russian scientist. ओके एंड उन्होंने एक बहुत सारे related to the soil कई सारे उन्होंने, he was a great edaphologist, sorry, pedologist. So उन्होंने कई सारे concepts दिए हैं related to soil. Okay, and he is also considered as the father of soil sciences because of this only. Okay, now according to him, he called the soil as a daily. Why? क्योंकि ऑन ए डेली बेसिस सॉइल में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं. देखिए पहली बार जब सैंड बना है, इट वोंट कीप क्वाइट, again it keeps on weathering to form silt, again silt keeps on weathering to form clay. Okay, and clay tries to take up as much as nutrients as possible so that it can up supply to the plants, right? So डेली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, and it's a very lengthy process, soil formation. So hence he also called them as daily. And there are five major factors that impact the soil formation. One, the biota impact, that is the life, the living organisms that are surrounding in that area. Okay, नेक्स्ट आता है इनिशियल मटेरियल, दैट इज अ पेरेंट मटेरियल फ्रॉम विच द सॉइल हैज जनरेटेड. ओके, अगर वो पेरेंट मटेरियल थोड़ा सा पोरस टाइप का है सही, तो बहुत इजीली सॉइल फॉर्मेशन होगा. इट वोंट टेक मच टाइम. बहुत हार्ड है एंड इट हैज लॉट ऑफ कैल्शियम इन दैट, सो द सॉइल दैट इज फॉर्म्ड विल बी रिच इन कैल्शियम. लाइक दैट इट हैज सम फैक्टर्स. टाइम, सो इट टेक्स बहुत ज्यादा टाइम लेता है, एंड अगेन दैट टाइम टेकन फॉर सॉइल फॉर्मिंग डिपेंड्स ऑन द वेरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. अगर वहाँ पे मॉइस्ट बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर चेंजेस बहुत ज्यादा है, देन इट विल टेक मोर टाइम. अगर स्टेबल टेम्परेचर है एंड ऑल दैट एंड मॉइस्चर कम है, देन इट विल टेक लेस टाइम. लाइक दैट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेस्ड ऑन विच द टाइम वुड टेक. Terrain, in which terrain the from which the soil in which the soil is being formed. Yes, please जो भी कर रहे हैं, I mean, please mute yourself. Yes. So last, that is the climate impact. Climate की वजह से it impacts the formation of soil. So these are the five major factors that has a say or that impacts the formation of soil or the genesis of soil. ठीक है? Now when we talk about soil, जब अभी just one second, अभी हमने देखा है कि when we talk about soil, it consists of soil minerals. Okay,
plus soil air plus soil water plus organic matter. Okay, now as you can see here, this is what it is: 1, 2, 3, 4. So soil mineral matter, this is the largest component that is present in soil. After that would be water and air, equally 25%. Again, अंडर एम्बियंट कंडीशंस, अगर वहां पे बहुत हाई टेम्परेचर्स एंड ऑल दैट, दिस माइट गो डाउन एंड दिस माइट कम अप. Okay, but otherwise in ideal conditions, whatever that we are saying, this is all in ideal conditions. Okay, in that organic matter would be 5%. This is the components of soil under ideal condition. Now we'll discuss about each of these in detail. तो सबसे पहले देखेंगे सॉइल मिनरल मैटर. नाउ दिस इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ द सॉइल. And when we talk about soil minerals, there are two major types. Okay, soil minerals already हमने बताया है कि it is sand, silt and clay. सैंड से सिल्ट बनेगा, सिल्ट से क्ले बनेगा. Okay, primary or secondary minerals, those two types that we are talking about, it depends on the mode of formation but not on the mineral composition. किस तरह से बना है वो important है. So here when we talk about primary minerals, these crystallize from the cooling magma, that is whatever the clay the minerals that are formed from the magma or the जो भी लावा के थ्रू जो मैग्मा आता है उससे जो बनता है, that is called as a primary minerals. And these minerals, they are found in sand and silt. They're very much similar to the parent material from which they are formed. And when we look at the physical characteristics of these primary minerals, they are generally round or irregular in shape. Example, your micas, feldspars, quartz, silicates, oxides, sulfates, all these are the primary minerals that can be found in the earth's crust. And currently, we know greater than 2000 minerals that are present in the earth's crust. Lekin only very few occur in abundance and rest of them are rare in nature. Okay, second आता है हमारा second type of minerals, secondary minerals. Now when the weathering of the primary minerals happen, that leads to the formation of secondary minerals. So primary minerals हम क्या बोल रहे हैं? Sand and silt. So after the weathering of this, what will form? So clay minerals. So clay minerals, silicate clays, these are considered, these are called as the secondary minerals. Now, those minerals that are chief constituents of rocks are called as essential minerals. That is, जो abundant में है. अभी हमने बोला था ना, तो जहाँ abundant में है and in parent material, and they have a say in deciding the characteristic features of the soil that is formed from those parent material. So, like your feldspars, pyroxenes, micas, etc. And these are in huge quantities. And those which are present in small quantities, whose presence or absence will not alter the properties of rocks, they are called as accessory minerals, like your tourmaline, magnetite, etc. ये कम quantity में पाया जाता है in the parent material, because of which they don't have much say on the characteristic features of the soil that has been formed from this parent material. जिस parent material से बन रहा है उस पर ज़्यादा कुछ उनके features नहीं रहते हैं. Okay, so this also is important, essential minerals and हमारे accessory minerals. ठीक है. Now when we talk about the minerals, they have some physical properties based on which also we can identify them. Like the physical properties include color. जो भी इसका natural color है उसके basis पे हम लोग denote कर सकते हैं. Their streak, that is, it refers to the color of the powder form of the mineral when an unknown mineral is rubbed against a piece of unglazed porcelain. So उसका एक color आ जाता है, that is called its streak. Okay, fracture or cleavage. Now when the way a mineral breaks, fracture is the nature of the surface produced as a result of its breakage. जैसे कि कुछ break होते हैं तो बहुत uneven type के होते हैं, rough type के होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही glossy होते हैं, बहुत sharp होते हैं. तो based on all that also you can identify the mineral. Hardness, how hard it is and how resistant a mineral is, to scratch it. Okay, like luster, that is how the way the mineral reflects light, कितना shiny है and all that. Crystal form, किस तरह का crystal है उसका. Okay, taste,
Again, this property is used to identify the mineral halite based on which we can understand कि salt किस तरह से है उसमें taste. Specific gravity again relates to the mineral density, कितना weight है उसका, and based on that कितना volume वो occupy कर रहा है, density high है, low है, etc. मैग्नेटिज्म, व्हाट आर इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, किस तरह से है. एफर्विसेंस, अगर एसिड्स के लिए एक्सपोज करेंगे तो वो किस तरह से फिज रिएक्शन देगा. दैट बायरिफ्रिंजेंस, दैट इज डबल रिफ्रैक्शन, किस तरह से लाइट पास हो रहा है. जैसे लाइट वन मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होता है तो वैसे नो इट रिफ्रैक्ट्स. सो उस तरह से इसमें रिफ्रैक्शन किस तरह से हो रहा है. फ्लोरेसेंस, दैट इज फोटोल्यूमिनेसेंस, किस तरह से लाइट को एब्जॉर्ब करके बाद में वो रेडिएट कर रहा है, ऑल दैट. ओके, सी दीज आर द वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज, okay, based on which the minerals can also be seen, that is the physical properties. Now when we look at the classification of minerals, देर आर 2 to 3 क्लासिफिकेशन. एक तो हमने देखा है बेस्ड ऑन देयर ऑरिजिन, देखा हमने प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल्स. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन द वेदरिंग ऑफ द मिनरल्स, and this is based on their chemistry and crystal form. Okay, so here very slow weathered or most resistant materials, मतलब एक बार वो फॉर्म हुए पेरेंट मटेरियल से, दे वोंट वेदर, इवन इफ दे वेदर दे टेक लॉट ऑफ टाइम to get converted, to weather. So here quartz, it is the most resistant mineral to weathering, important. Muscovite. Second, slowly weathered or moderate resistant minerals, है कि धीरे धीरे से अपना weathering होता रहता है. feldspars, biotite minerals, they fall under this. थर्ड, इजीली वेदर्ड और लीस्ट रेजिस्टेंट मिनरल्स, ये बिल्कुल बहुत जल्दी, मतलब इनका जो नेचर, जो पेरेंट मटेरियल होगा ना, उसमें कंपलसरी the amount of calcium etc are high. So that's the reason calcite, it is least resistant mineral, मतलब बहुत जल्दी जल्दी वेदर हो जाता है वो. So these are some of the examples of the minerals based on weathering, and this is based on their chemistry, like native elements, gold, silver etc. उसी फॉर्म में हमें मिलेंगे वो, उसका कोई और कंपाउंड फॉर्म में बहुत रेयरली होता है कंपाउंड फॉर्म में मिले, अदरवाइज you'll find them as natively, जितना प्योर फॉर्म में है उतना मिलेंगे. मतलब ओनली होंगे भी तो कंपाउंड फॉर्म में नहीं, बट सम इम्प्यूरिटीज ओनली वुड बी देयर, लाइक योर गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी, ग्रेफाइट, डायमंड एक्सेट्रा. ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, इनमें ओ एच आयॉन्स होंगे. ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन वाला होगा. सल्फाइड्स, सल्फेट्स, S2, SO4, कार्बोनेट, CO3, फॉस्फेट्स, PO4, halides like your salts, rock salt. Silicates, silicates may be based on the structure. There are different types of silicates like orthosilicates, ring silicates, chain silicates, sheet silicates, framework silicates, again based on the silicate, जब भी हम लोग ये देखते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाउ दे आर प्रेजेंट इन दैट कॉम्पाउंड. ओके, सो ये हो गया. नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी क्ले मिनरल्स. ओके, नाउ सेकेंडरी क्ले मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट है द सिलिकेट क्ले यूनिट. जो सेकेंडरी क्ले मिनरल होगा, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट शीट्स comprised of one type if sheet is dominated by silicon and the other by either aluminium or magnesium. यहाँ पे है, देखिए. Okay, silicon generally, silica dominated sheet, it's tetrahedral. Okay, and aluminium or magnesium sheet is called as octahedral, क्योंकि silica sheet, silica dominated sheet जो है, silicon dominated sheet, it would be tetrahedral, that is four sided. And when we talk about this aluminium or magnesium sheet, it would be 8-sided blocks. Okay, as you can see, this octahedral sheet. Based on this only, there are various types of minerals. Once again, yes, clay minerals. So here there are 1:1 type of clays where one tetrahedral sheet is available for each octahedral sheet. So एक tetrahedral sheet होगा, उसके साथ एक octahedral sheet होगा, जो arrangement of the layers. Okay, 2:1 क्लेस में क्या है, 2 टेट्राहेड्रल शीट फॉर ईच ऑक्टाहेड्रल शीट, मतलब यहाँ एक टेट्राहेड्रल शीट, यहाँ एक टेट्राहेड्रल शीट, बीच में ऑक्टाहेड्रल शीट सैंडविच टाइप का रहेगा. Okay, when we talk about 1:1 type of clays, best examples are kaolinites.
Okay, and when we talk about 2:1 type of clays, they are montmorillonites, illites, muscovites, tri or vermiculite, and ये एक और है कुकीट और चैस्मोटाइट, ये भी 2:1 टाइप का क्लेस ही है, बट इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. ओके, फॉर अस दीज टू आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड मैंने इसका एक टेबल भी बनाया है सो दैट इट वुड बी, देखिए ये 1:1 टाइप मिनरल है, ये 2:1 टाइप मिनरल है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल. ये एक्चुअली फुल आपको दिख नहीं रहा है, बट देर आर 8 साइड्स टू दिस. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, यहाँ पे 4 साइड्स, 1 2 3, एक तो 4 टेट्राहेड्रल. सो ये हो गया हमारा सेकेंडरी मिनरल्स का बेसिक कंपोनेंट्स. नाउ दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. पूरा मैंने एक जगह पे आपको इंफॉर्मेशन दे दिया है. सी, सेकेंडरी मिनरल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मिनरल्स आर केओलिनाइट, मोंटमोरिलोनाइट, वर्मिक्यूलाइट, हाइड्रस माइका एंड क्लोराइट. उसके अगेंस्ट फीचर्स ये सारे इंटरलेयर कंडीशन बॉन्डिंग किस तरह से है. व्हेन वी टॉक अबाउट केओलिनाइट, लैक ऑफ इंटरलेयर सरफेस और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग ज्यादा नहीं है. ओके, दैट्स द रीजन, sorry, lack of interlayer surface, because of which there is strong bonding. That's the reason they fall under non expanding. Even if you put water, they'll not expand. जैसे आप montmorillonite, these are the clay minerals that are present in huge quantities in black soils. Very very important. Now black soils में क्या है, आप पानी डालते हैं किस तरह से पूरा expand हो जाता है, and when water dries up it will compact. So this expansion nature, it is because of this weak bonding of the layers. Okay, and the 2:1 layers they have, and they are expanding in nature. Okay, vermiculite again, weak bonding, great expansion, so expanding type of 2:1 type of minerals. Hydrous mica, here again strong bonding, because of which they are not non expanding, expansion नहीं रहता है. अगेन क्लोराइट यहाँ पे 2:1 टाइप है, अगेन इट इज नॉन एक्सपैंडिंग. ठीक है, नाउ दीज हैव, दिस इज कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी. कल हमने किया था कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी. सी, व्हेनेवर देयर इज नॉन एक्सपैंडिंग, एज यू कैन सी हियर, द कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ देम इज लो, बिकॉज कम स्वेलिंग पोटेंशियल है, सो इट मीन्स दे विल नॉट बी एबल टू टेक अप एनीथिंग. उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है, आई मीन आपस में ही, कि आउटसाइड जो न्यूट्रिएंट्स वो सब दे विल नॉट बी एबल टू लैच ऑन टू देम. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल. सो जहां पे भी एक्सपैंडिंग क्लेस है, वहां पे उनका कैटआयन एक्सचेंज कैपेसिटी बहुत हाई रहेगा, एज यू कैन सी हियर. सो इट मीन्स इनका जो न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, दिस वुड बी वेरी हाई compared to the non-expanding form of clay minerals, example kaolinite, hydrous mica and chlorite. Okay, so swelling potential यहाँ पे नॉन एक्सपैंडिंग है, सो ऑलमोस्ट नन. एक्सपैंडिंग हाई, एक्सपैंडिंग हाई, लो, नॉन एक्सपैंडिंग नन, बिकॉज नॉन एक्सपैंडिंग. एंड एक्सपैंडिंग वाले मिनरल्स ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट हमारे लिए एज सच, बट इन केस ऑफ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, because of the crops in which they are grown. ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इसलिए मैंने पूरा टाइम लगा के इसको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो प्लीज लेट मी नो. सो दिस इज व्हाट वी हैव डन. मिनरल मैटर विच फॉर्म्स 45% ऑफ द टोटल सॉइल कंपोनेंट. नेक्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट ऑर्गेनिक मैटर, उसका प्राइमरी सोर्स क्या है ऑर्गेनिक मैटर का? हायर प्लांट टिश्यू. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. which is the primary source of organic matter? It is a higher plant tissue, and animal tissue, or animals are usually considered secondary sources of organic matter. Okay, now when we talk about the composition of organic matter, it has undecomposed soil organic matter along with decomposing organic matter, and plus, see, whenever we talk about organic matter, मैं वो भी table दिखा देती हूँ, that would be easy. See, when we talk about organic matter as such, see, we have fresh residue, that is fresh organic matter completely undecomposed. Okay, now this is less than 10%.
ऑफ द टोटल जो भी ऑर्गेनिक मैटर रहेगा किसी भी सॉइल में, उसमें ऑलमोस्ट लेस देन 10% हमारा फ्रेश रेसिड्यू ही रहेगा. उसके बाद हमारा आता है डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर विच इज द एक्टिव फ्रैक्शन हियर. Okay, so here this is the one that is decomposing. एक second. Decomposing, this is decomposing organic matter, and the higher the decomposing organic matter, the higher would be the acidity in the soil. Okay, now ये होने के बाद next हमारा आता है stabilized organic matter, that is humus, completely dead and decomposed matter. This is completely decomposed. Okay, now higher the humus, higher would be the nutrient status of that soil, and उसी में living organisms भी होंगे, microorganisms that are working on this fresh residue and the decomposing organic matter to convert that into decompose, so that forms less than 5% of the total organic matter. ठीक है. Now when we talk about organic matter, it is considered as a revolving nutrient fund and also an agent to improve soil structure, maintain tilth and minimize erosion. Okay, soil structure क्या है, किस तरह के उसका status रहेगा, based on which roots भी सही से grow कर सके, it supports the plant growth etc, that all falls under structure. Okay, जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल करेंगे उसमें सॉइल स्ट्रक्चर ये सब हम लोग बहुत डिटेलली करेंगे along with that all that pictures. Okay, next, maintaining the tilth. Tilth is a status of the this soil after tillage, जो भी वो physical status होगा, that's called as tilth, and it should be perfect, मतलब porous या friable condition में होना चाहिए. It should have 50 to 60% moisture. फिर the depth of the soil should be in such a way that it should support the growth of the roots. All that forms the tilth. Okay, next, erosion भी minimize करेगा. So whenever the rate of addition is, now this fresh residue keeps on adding, right? Now whenever the rate of addition is less than the rate of decomposition, soil organic matter declines. Obviously, क्योंकि जैसे जैसे convert हो रहा है वैसे वैसे plants ले रहे हैं. So when this rate of fresh residue addition कम हो जाएगा तो automatically organic matter का कम हो जाएगा. And whenever the rate of addition is higher than the rate of decomposition, soil organic matter increases, thereby again उसका जो decomposition है that has to happen. So here this जो balance होगा तभी हमारा जो soil का pH है that would be balanced, right? So here that particular balanced nature is called as steady state. Steady state means a condition where the rate of addition of the organic matter is equal to the rate of decomposition. Thereby ना तो fresh residue ज़्यादा रहेगा इसमें, ना तो ज़्यादा humus रहेगा. Thereby the pH, the organic matter, available nutrient content etc, all can be maintained. This again is important for you. Okay, last would be the humus, which contributes mainly to the nutrient holding capacity, soil color and water holding capacity of the soil. ये हो गया हमारा. ठीक है. Now the moisture content of plant residues in that organic matter vary from 60 to 90%. On an average 78% तक contribution रहता है and 25% is dry matter. अगर other than the components अभी जो हमने देखा है. Now when we talk about these plant tissues, that is organic residues, they may be divided into organic and inorganic. ये table आप याद रखिए. हो गया. See, organic residues, it can be organic or inorganic, like mineral matter or ash like sulfur, phosphorus, chlorine, calcium. These are all inorganic mineral matter. Okay, organic mineral matter में again two types, nitrogenous and non-nitrogenous. Now organic directly वो ले नहीं सकते plants, right? They have to be converted into inorganic, only then the plants can take up the nutrients. This we have done yesterday, only mineralization, and right? So when we talk about those organic, nitrogenous, so insoluble proteins, water soluble nutrients etc would be there. Now these would be converted into inorganic component and then that would be absorbed by the plants. वही तो पूरा हमारा डिकम्पोजिशन आता है. डिकम्पोजिशन में क्या आता है? मिनरलाइजेशन एंड ऑल दैट, राइट? सो नॉन नाइट्रोजन इसमें आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ईथर सॉल्युबल मिसलेनियस लाइक लिग्निन, सेल्यूलोज एंड ऑल दैट विल फॉल अंडर दिस. ओके, सो हियर
These are the residues that is organic matter residues or the fresh residue जो अभी हमने वहां देखा था in the other diagram or the photograph. So that would be this organic matter which has all these components. Now decomposition of soluble substances वो किस तरह से होता है? Sugar and water soluble nitrogenous compounds are the first to be decomposed as they offer a very readily available source of carbon, nitrogen, and energy for the microorganisms. So here sugar is the first one compound in the organic matter to be decomposed. So sugar plus oxygen under aerobic conditions this happens and it convert into carbon dioxide plus water. Okay. एंड डीकम्पोजिशन ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस में कई सारे हैं जैसे कि अमोनिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन एक्सेट्रा अमोनिफिकेशन क्या है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कन्वर्टेड इनटू अमोनिया और सॉल्ट्स नाइट्रिफिकेशन क्या है अमोनिया कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट्स फर्स्ट नाइट्रेट्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन नाइट्रेट्स में यहाँ पे एग्जांपल्स भी दे दिया है अमोनिया टू नाइट्रेट एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास नाइट्राइट टू नाइट्रेट नाइट्रोबैक्टर ओके कई बार ऐसा होता है कि अगेन दिस सॉइल नाइट्रेट्स कन्वर्टेड इनटू gaseous nitrogen or nitrous oxide this is called as denitrification right and waterlogged conditions and high pH that will increase this denitrification process actually that's the reason when we apply हमने देखा है when we talked about the application of fertilizers especially nitrogenous fertilizers to paddy we said that that has to be placed then the fertilizer has to be placed very deep into the soil near the root zone otherwise it might escape why because of the high pH and the waterlogging conditions will increase the denitrification so in order to avoid that they have to be placed very close to the roots. नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक योर ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स नाउ प्रोटीन्स किस तरह से ब्रेक डाउन होंगे फर्स्ट हाइड्रोलिसिस वाटर के बेसिस पे प्रोटियोसिस पेप्टोन्स पेप्टाइड्स नाउ दिस वुड बी कन्वर्टेड slowly to amino acids amides and then to ammonia so this process of conversion of this amino acids to ammonia is called as aminization important ये सारे टर्मिनोलॉजी है ना स्टैटिक पार्ट है सो यू हैव टू रिमेंबर ओके हर नो एक प्रोसेस है तो उसके लिए एक टर्म होगा सो प्लीज बी केयरफुल विद दैट ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज सेल्यूलोज किस तरह से होगा सेल्यूलोज फर्स्ट विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम हाइड्रोलिसिस होगा टू सेल्लोबायोस अगेन हाइड्रोलिसिस के थ्रू ग्लूकोज होगा अगेन दैट ग्लूकोज वुड बी थ्रू ऑक्सीडेशन कन्वर्टेड इनटू वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देन कन्वर्टेड इनटू carbon dioxide plus water and if you noticed one thing in between हर जैसे decomposition हो रहा है in one or the other step in that two the step in between or you can say intermediate steps जो होते हैं उसमें compulsory कहीं ना कहीं acids release तो हो रहे हैं right and along with that though here nothing has been mentioned along with this acids release acids as release से ज़्यादा I should say as intermediate compounds okay इसके साथ साथ lot of heat also would be generated okay so that you have to remember two things acids होंगे compulsory कहीं ना कहीं यहाँ पे organic acids यहाँ पे amino acids यहाँ पे again amino acids okay इस तरह से that leads to acidity and next breakdown of hemicellulose again ये भी insoluble substances है so here in this case hemicellulose are first hydrolyzed to their component sugars and uronic acids now these uronic acids are further broken down into pentose and carbon dioxide now what is this pentose मतलब कोई भी 5 carbon compounds generally 5 carbon compounds क्या होते हैं related to sugars like your ribose वो भी पेंटोस ही है एंड C5 C6 ग्लूकोज C6 है और क्या क्या है अभी तो मुझे वही याद आ रहा है राइबोस वाला सो पेंटोस शुगर्स एक्चुअली यहाँ पेंटोस शुगर्स आई शुड से ओके नाउ अगेन hemicellulose decompose faster than cellulose because of their structure physical structure ये हो गया नेक्स्ट आता है ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च केमिकली स्टार्च भी ग्लूकोज का ही एक पॉलीमर है पॉलीमर्स मतलब
एक ही though the combination, the number of molecules, atoms at all would be same, उनका जो structure है that would be different. दो, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का C6 कंपाउंड है, स्टार्च का भी C6 ही होगा, बट उसका जो प्रेजेंटेशन है, molecular presentation, that would be little bit different. So that's the reason it's also called as polymers. They are called as. It is first hydrolyzed to maltose to the action of enzymes because of amylases. Maltose is next converted to glucose, starch to maltose, maltose to glucose, and now glucose, which is being soluble in water, is utilized for growth and other metabolic activities by the plants directly. ओके, सो इस तरह से डीकम्पोजिशन अलग अलग तरीके से होगा, जैसे कि डीकम्पोजिशन ऑफ ईथर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, यहाँ पे ईथर सॉल्युबल मतलब फैट्स. So fats are first broken down by microorganisms through the agency of enzymes, enzyme lipase, यहाँ पे enzyme lipase use होगा, into glycerol and fatty acids. Glycerol is next oxidized to organic acids, which along with the other fatty acids are finally oxidized to carbon dioxide and water. ओके हर जगह पे एसिड्स आएंगे डीकम्पोजिशन में, दैट्स द रीजन डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर लीड्स टू एसिडिटी इन सॉइल्स. डीकम्पोजिशन ऑफ लिग्निन, लिग्निन क्या, इट इज डिपॉजिटेड इन द सेल वॉल टू इम्पार्ट स्ट्रेंथ, तो इसका एक अलग सा रहेगा, इट टेक्स मोर टाइम फॉर डीकम्पोजिशन, सो इट डीकम्पोजेस स्लोली, मच स्लोअर देन सेल्यूलोज, इसमें कैल्शियम कंपोनेंट बहुत हाई रहता है. सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ लिग्निन गिव्स राइज टू कार्बन डाइऑक्साइड, एट द एंड मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही रहेगा. सिंपल डीकम्पोजिशन प्रोडक्ट्स लाइक योर मिनरलाइजेशन ऑफ सल्फर और your carbon dioxide, nitrate, nitrogen accumulates, etc. All these fall under the simple decomposition products. Actually, mineralization of organic sulfur, mineralization of organic phosphorus, ये दोनों भी actually इसी में they fall. Okay, ये मैंने गलती से रेड किया है, otherwise I should have made it black. Okay, so like sulfur plus oxide sulfates again made available to the plants. सो दिस वी हैव ऑलरेडी सीन. ये हो गया हमारा, अभी तक हमने देखा है सॉइल मिनरल्स, वी हैव सीन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में मिनरलाइजेशन, इमोबिलाइजेशन, CN ratio, ideal CN ratio, what will happen if it is high, what will happen if it is low, what is carbon rich compounds, what are nitrogen rich compounds, all this we have seen in the earlier sessions only. So मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूंगी यहाँ पे, ठीक है. अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन ऑलवेज कम बैक टू मी. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल वाटर. ओके, नाउ सॉइल वाटर के कंपोनेंट्स में जाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहती हूँ, ठीक है. नाउ दैट कॉन्सेप्ट, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ना. नाउ फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए फील्ड. ओके, ये आपका फील्ड है. Now when this field is filled with water completely, इस तरह से कि all the micropores, macropores, everything is filled with water only. कब रहता है ऐसा situation? Immediately after the flood irrigation or after raining, right? But this is a temporary state and this situation is called as saturation. Okay, matlab all the pores, micro, macro, everything is now filled with water, and this is also called the field capacity of that field. 100% सारे pores filled with water. Okay, now after some day, 2 to 3 days after that, gravitational pull in सबकी वजह से the water will go down. Okay, and the water will go down and there is only some amount of water in the soil. Now that is what this is. This is that some amount of water that is left in the field. Okay, this is actually called as available water holding capacity of the soil. Okay, now what will happen? अब plants है इसमें, अगर plants है evaporation होता रहेगा, plants के through transpiration होता रहेगा, plants photosynthesis में भी water use करेंगे, so they keep on absorbing water, right? So the water keeps on going down and at some point if we do not replenish it, अगर हम फिर soil को water नहीं दे रहे तो it will reach a situation where there is no water at all present in that. This is called as permanent wilting point, मतलब बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, and this is that situation where water is unavailable to the plants
Okay, and this will, once permanent wilting point matlab the plant is died, it is dead. Okay, now when you have to give irrigation, ये हमारा सैचुरेशन है, इरिगेशन की ज़रूरत नहीं है. नाउ ये पॉइंट रीच होने से पहले हमें इरिगेशन देना चाहिए, बट एट व्हाट पॉइंट? सो दैट वुड बी, जो भी ये अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का हम लोग जो बोल रहे हैं, when the water reaches 40 to 50% of this available water holding capacity of that particular soil, we have to irrigate. So here water managed for irrigation scheduling. Okay, and this is also called as maximum allowable depletion, MAD. So MAD condition जब आता है, that is, MAD is nothing but 40 to 50% of the available water holding capacity. ये जब situation आता है, immediately we have to provide water to the plants, that is we have to schedule an irrigation. Otherwise what will happen? Plants water लेते रहेंगे and they will reach permanent wilting point and they'll die. ओके, सो यहाँ पे टर्म्स सैचुरेशन, फील्ड कैपेसिटी, मैड और AWC, PWP, that is permanent wilting point, available water holding capacity. So the water availability between the field capacity and the permanent wilting point is the available water holding capacity of the soil. ओके, ऑल दीज टर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझ में आ गया तो आगे जब हम लोग सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल पोरोसिटी, सॉइल टेक्सचर वो सब करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. Yes, hope it is clear. कहीं पे भी डाउट है तो प्लीज आस्क मी. नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ सॉइल वाटर. सबसे पहले आता है हमारा ग्रेविटेशनल वाटर, उसके बाद आता है हमारा कैपिलरी वाटर, उसके बाद आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ठीक है, नाउ अभी हमने देखा है कि सैचुरेशन. ओके, सैचुरेशन के बाद मैंने ये भी बोला है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल some amount of water will leach down, that will go percolate into the deeper layers of soil. Now that water is called the gravitational water. Now this is a free water that moves through the soil below the root zone due to the force of gravity. And gravitational water is found in the macropores में जहाँ पे actually air होना चाहिए वहाँ पे because of excessive water they have taken over that place. So air फिर आने की कोशिश करेगा and that this has to go down. So it moves rapidly out of well-drained soil and is not considered to be available to the plant. So gravitational water plants के लिए available नहीं रहेगा. Okay. Next, now after the gravitational water, whatever the water, ये पूरा चला गया अभी. Now after this, whatever the water that is left over in the soil, in the micropores, that is called the capillary water, because this water is stocked or it is held in the micropores against the gravitational pull. Okay, so here the water that remains in the soil after gravitational water is drained out subject to the loss of capillary movement, that is called as capillary water. Now this is the one that is the available water to the plant. So this is water is available for plant growth. जो अभी हमने यहाँ इस फोटोग्राफ में देखा है ना, available water holding, this is the capillary water. Okay, now capillary water, this is the only water that is available to the plants. ओके, उसके बाद आता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. नाउ प्लांट्स ने यहाँ से पूरा पानी ले लिया, यहाँ से पानी ले लिया. नाउ अ वेरी थिन फिल्म ऑफ वाटर विल बी एनवेलप्ड ऑन द सॉइल पार्टिकल्स. नाउ दिस वाटर इज हेल्ड वेरी टाइटली as thin film around that soil particles, and this also water is not available to the plants. Okay, so ये situation आया मतलब this it is heading to the permanent wilting point state. यहाँ पे ये जो transition है ना, here you'll get the hygroscopic water. Again this is also not available to the plants. Now अगर आपको question पूछा जाएगा कि what is the soil water that is available for the plants for their growth, that would be only capillary water. ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटेशनल पुल से चला जाता है, हाइग्रोस्कोपिक वाटर वेरी टाइटली हेल्ड अगेंस्ट, सो वहां से रूट हेयर्स दे कांट एब्सॉर्ब दैट वाटर. डन. ओके, होप इट इज क्लियर. नाउ when we talk about this water holding capacity of the soil, clay containing soils generally have the highest available water capacity
फील्ड कैपेसिटी, वाटर कैपेसिटी, अवेलेबल वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं इन द एग्जाम टू आस्क यू why clay containing soils have the higher available water holding capacity? Because of the greater number of pores that it contain. What are the greater number of pores that it contain? Micropores. दैट्स द रीजन, जहां पे भी क्लेई सॉइल होगा, आप एक बार वाटर डालने के बाद कई दिनों के बाद वाटर नहीं भी देंगे तो दे विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट, प्लांट्स विल बी एबल टू सर्वाइव इन दैट. ओके, सो दिस इज वाई यहाँ पे जो टेक्सचुरल क्लास जब करेंगे ना, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस. वंस वी डू दैट आई विल अगेन टेक यू थ्रू दिस, डोंट वरी. नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल एयर. ओके, now the volume ratio of the three constituent phases of soils, solids, water and air, continuously changes as the soil undergoes wetting or drying, welling, you know, जिस तरह से वो change होता रहता है, the composition also changes, right? So specifically water and air compete for the same pore space. Hence their volume fraction is so related that an increase in one generally decreases the other. So वहाँ पे हमने देखा है saturation में, when the entire, the even the macropores are filled with water, air would be not there. Okay, अब gravitational pull से वो चला गया तो that would be again occupied by air. So always they are the ones, they'll keep on competing. Field capacity हमने देखा, it is the amount of water that a particular kind of soil can store in it, right? So उसी तरह से field air capacity, it is a fractional volume of air in the soil at field capacity. Field capacity के time पे जितना भी air उस particular field में रहेगा उस soil में, that is called the field air capacity of that soil. Important. Again, the air capacity depends on the soil texture. Soil texture मतलब क्या है? It is the mixture of sand plus silt plus clay in the soil. These three, इन तीनों का किस तरह का composition रहेगा, that would be called as a soil texture. उसी के basis पे we have some 12 to 15 soil textural classes. वो हम properties of soil में पढ़ेंगे. For now, try to understand this much. In sandy soils, when we look at the pore spaces, it is in the order of 25% or more. उतना soil air रहेगा. Okay. In loamy soils, it is generally between 15 to 20%, and in clay soils, which tend to retain more water, वहाँ पे टोटल सॉइल वॉल्यूम में देखा जाए तो सॉइल एयर बिलो 10% ही रहेगा, क्योंकि उसमें माइक्रोपोर्स ज़्यादा रहेंगे. माइक्रोपोर्स में एयर से ज़्यादा वाटर होल्ड कर सकता है. ठीक है. Now, when oxygen content of the soil is limited, the growth of most crops is affected. Soil air is also very, very important. उसमें oxygen बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि roots they take up oxygen and release carbon dioxide, right? So, अगर if the percentage of the oxygen in that soil air goes below 2%, it would stop the plant growth. मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा water है. So there is a high likely chance that the plant will die. Exceptions say like paddy, where they can grow in the waterlogging conditions also, right? So यहाँ पे potato, tobacco, cotton, linseed, tea and legumes need higher level of oxygen in soil air compared to other crops. That's the reason they can't withstand waterlogging conditions. Okay, cereals except rice are intermediate in oxygen requirement, and paddy or rice can tolerate very low level or even complete absence of oxygen in the soil. Very, very important. जब हम लोग करेंगे वाटर लॉगिंग कंडीशन इरिगेशन में, देन अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट्स. नाउ एक एक्सेप्शन भी है, जैसे मार्श लैंड्स या स्वॉम्प्स में मैंग्रोव प्लांट्स टाइप के हैं, उनमें न्यूमेटोफोर्स होते हैं. दीज आर नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स. नॉर्मली रूट्स किस तरह से होते हैं? पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक, but in this case they are negatively geotrophic because they have to survive in that marshy lands. So against the gravitation, the roots will, these geotrophic, negatively geotrophic roots arise from the underground roots which have lenticels, मतलब वो एक pores ही होते हैं इसमें, and that would be converted into pneumatophores. Pneumato means जहाँ पे भी हम लोग सांस लेते हैं, okay, respiration के लिए use होते हैं, there you'll use pneumo. Okay, so pneumatophores, that is those pores जो होते हैं. See, these are also called breathing roots as they bear openings called lenticels for gaseous exchange. Since they have lenticels, no, pores for gaseous exchange, these roots are called as pneumatophores. ये भी important है आपके लिए. Okay.
नेक्स्ट कम्स द होराइजन्स ऑफ सॉइल, दैट इज सॉइल में होराइजन्स किस तरह से होते हैं. नाउ होराइजनेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ सॉइल इन डिफरेंट होराइजन्स अलोंग द डेप्थ ऑफ द सॉइल बॉडी. डिफरेंट लेयर्स में रहता है सॉइल एक्चुअली, एंड द डिफरेंशिएशन that lead no the differentiation of this horizonation is due to various fundamental processes of soil formation like humification, alluviation, etc. Now if you look at the soil horizons here, सबसे पहले आता है O horizon. Okay, O horizon मतलब organic मतलब जो भी dead and decaying leaf matter, head, animal debris, that all keeps adding to this top soil. So this is O horizon. जहाँ पे ट्रीज ये सब कम है वहां पे ओ होराइजन ना के बराबर होता है, और जहाँ पे बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत ज्यादा होता है. सो दिस इज लिटिल लेयर एंड समटाइम्स ऑप्शनल ऑल्सो. द ओ होराइजन इज थिन इन सम सॉइल्स, थिक इन अदर्स, एंड नॉट एट ऑल प्रेजेंट इन अदर्स. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन द वहां पे वेजिटेशन किस तरह से है. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लेयर. सेकेंड लेयर आता है ए होराइजन. ए होराइजन मतलब टॉप सॉइल. सो मोस्टली मिनरल्स फ्रॉम द parent material with organic matter is incorporated here. And if we look at the A horizon as such, it is divided into A1, A2, A3 horizon. उसी A2 horizon को E horizon भी कहते हैं, that is zone of alluviation. Okay, why it is called as zone of alluviation? It is because the process of removal of constituents, जो ऊपर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कीप ऑन वाटर जब नीचे जाता है, along with that सस्पेंशन में और सोल्यूशन में जो वाटर जाता है उसी में न्यूट्रिएंट्स पूरे उसमें dissolve होते हैं. Okay, and by the percolating water from the upper to lower layers, so encompasses mobilization and translocation of mobile constituents that results in the textural differences, and this process is called as alluviation. And since that is washing out, यहाँ से wash out होके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स न्यूट्रिएंट्स ये सारे यहाँ पे सेटल हो रहे ई होराइजन में, एंड इसी की वजह से देर इज अ टेक्सचुरल डिफरेंस बिटवीन दीज टू, एंड ऑल्सो color difference between these two. Okay, and hence this layer A2 horizon, that is E horizon, it's also called as zone of alluviation or E horizon as such. A2 or E or zone of alluviation it's called. Okay, and it's also called as leaching layer or washing out layer, etc. ये हो गया. And further there is next layer is B horizon. Now this is the alluvial horizon. Now यहाँ पे further जब water नीचे जाएगा, they will take rich nutrients along with that water while the water moves, and they deposit those soil materials and nutrients in this horizon, and this process is called as alluviation. So the process of deposition of soil materials that are removed from the alluvial horizon in the lower layer is called as alluviation. Okay, hence this zone is B horizon is also called as zone of alluviation. And this B horizon or the B zone, it's considered as the nutrient rich zone, बिकॉज जितने भी न्यूट्रिएंट्स यहाँ से लीच आउट होते आएंगे, दैट ऑल विल सेटल डाउन हियर, एंड इससे नीचे नहीं जाएगा वो. ओके, सो वेन एवर प्लांट्स दे रूट्स जब ग्रो करते हैं, दे ट्राई टू रीच दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सब सॉइल. ये सब सॉइल तक रीच होने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दिस इज द जोन फ्रॉम वेयर दे विल गेट गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. ओके, एंड कई बार क्या होता है, कंटिन्यूस टिलेज प्रैक्टिसेस या कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स ऑन द दैट फील्ड, दिस पर्टिकुलर सब सॉइल इट गेट्स हार्डेंड, बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि जब टिलेज भी होगा तो दे डोंट गो टिल इतने नीचे तक नहीं जाता है, ये 60 ग्रेटर देन 60 सेंटीमीटर्स के नीचे रहता है. ओके, ऑन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सॉइल. सो यहाँ पे ज्यादा टिलेज एवरी ईयर टिलेज नहीं होता है. ठीक है, सो एट वन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हार्ड हो जाता है. दैट particular situation is called as hard pan formation or plow sole formation. Okay,
So we have to break this subsoil once in 4 to 5 years. Deep tillage needs to be performed, or this is also called as subsoiling. Okay, तो उस टाइम पे they break this स्ट्रक्चर यूजिंग वेरियस टिलेज इम्प्लीमेंट्स, जो हम लोग जब टिलेज करेंगे आई टेक यू थ्रू दैट इन ए डिटेल्ड मैनर एंड व्हाट काइंड ऑफ इम्प्लीमेंट्स दैट कैन बी यूज फॉर सबसॉइलिंग. ठीक है, तो अभी के लिए ये समझ लीजिए कि दिस इज द रिचेस्ट एंड वी हैव टू ब्रेक ओपन दिस एवरी 4 to 5 years so that plants can get nutrients for themselves. Okay, important. After that उसके नीचे लेयर आता है सी होराइजन, जो पेरेंट मटेरियल सबस्ट्रेटम होता है, एंड उसके नीचे आर होराइजन दैट इज बेड रॉक. जनरली इसी रीजन में हमें ग्राउंड वाटर भी मिलता है. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, अभी टाइम क्या हो रहा है? 1 सेकेंड, क्योंकि मैं अगर स्टार्ट करूंगी तो डोंट वांट टू स्टॉप. ओके, अभी और 10-15 मिनट तो कर ही सकते. विल कंप्लीट दिस. नेक्स्ट कम्स इज सॉइल टैक्सोनॉमी. ना व्हाट इज सॉइल टैक्सोनॉमी? जैसे कि हमारा बोटेनिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसी तरह से सॉइल का भी क्लासिफिकेशन होता है. नाउ दिस इज द सॉइल टैक्सोनॉमी. United States Department of Agriculture, they have come up with this soil taxonomy. Okay, and developed by the US Department of Agriculture and the National Cooperative Soil Survey. They both have come together to provide an elaborative classification of soil types according to several parameters. Okay, and in several levels. वो several parameters क्या है? Primary basis for identifying different classes are the properties of soil rather than the genesis. उसके properties क्या है, उसके basis पे ही ये soil classification हुआ है. And this is very very important, इसलिए मैंने यहाँ red पे highlight किया है. And the nomenclature deployed here is either Latin or Greek words. Okay, and these are basis for the nomenclature of the soil taxonomy. When we look at the soil taxonomy, सबसे ऊपर आता है order. ऑर्डर के सब ऑर्डर, सब ऑर्डर के ग्रेड ग्रुप, ग्रेड ग्रुप्स के सब ग्रुप, सब ग्रुप्स के फैमिली, फैमिली टू सीरीज. बट हियर फॉर अस जो हमें पढ़ना है दैट वुड बी ऑर्डर्स ओनली, सॉइल ऑर्डर्स. Okay, so that is what we'll be doing. There are 12 soil orders as per the USDA soil taxonomy. सबसे पहले आता है insectisols. Insectisols मतलब लैटिन वर्ड है, inceptum मतलब beginning. Here the moderate degree of soil development you can see. It is rather young soil. जब भी young soil, old soil ऐसे कुछ आएगा ना, when we talk about young soils, they have good amount of sand and silt. Old soils में generally highly weathered, they have clay minerals. Okay, along with again जो भी leach out होता है, उसके बाद जो भी leftover material होता है, that would be there. ठीक है, so this exhibits a moderate degree of soil development lacking significant clay accumulation since it is young soils. So कम clay होगा. They occur over a wide range of parent materials and climatic conditions and thus have a wide range of characteristics. ना बहुत difference रहेगा एक जगह से दूसरे जगह के insectisols में. One order. Second is antisols. Now antisols exhibit little to no soil development other than presence in the identifiable top soil horizon. ये ऊपर सबसे ज्यादा रहेंगे. These soils occur in areas of recently deposited sediment. जैसे कि कहीं पे बहुत सारे नदियां हैं. Okay, so जो उन नदियों के डिपॉजिट्स से बनता है, दैट्स व्हाई इट्स आल्सो कॉल्ड एज ए जोनल सॉइल. क्योंकि जोन्स तब बनेंगे ना, तब नॉर्मल हमारा पूरा क्या बोलते हैं, सॉइल जेनेसिस सब होगा, राइट. पेरेंट मटेरियल ब्रेक डाउन होगा, एज यू कैन सी हियर पेरेंट मटेरियल वो ब्रेक डाउन होगा सब सी होराइजन में, सी होराइजन से बी, उस तरह से डेवलप, उस तरह से सॉइल फॉर्म होगा. बट यहाँ पे तो डिपॉजिट्स की वजह से हो रहा है, हेंस एंटीसॉल्स ए जोनल सॉइल्स भी कहे जाते हैं. ठीक है,
Often, in some typical landforms where antisols are located include active floodplains, dunes, landslides, and behind retreating glaciers, etc. They are common in all environments again. And alluvial soils are the one that are formed from this order antisols. That's why alluvial soils are considered as one of the most rich nutrient soils. Okay, because they are the deposits of soils, deposits of dunes, deposits of landslides. बिल्कुल न्यूट्रिशन के साथ आता है वो. नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वर्टिसॉल्स. Now vertisols Latin verto means turn. So here these are clay rich soils. मतलब these are old soils containing a type of expansive clay that shrinks and swells dramatically. And vertisols are highly fertile due to their high clay content. However, water tends to pool on their surfaces when they become wet and dry होने पे वो टूट जाते हैं. So vertisols are located in areas where the underlying parent materials allow for the formation of expansive clay minerals like montmorillonite, etc. Okay. Next आता है oxysols. Now, these are present in the tropical and subtropical region, highly weathered soils and thus low natural fertility. क्योंकि वेदरिंग होने की वजह से, ऐसा नहीं कि वेदरिंग की वजह से सिर्फ क्ले ही बनता है. वेदरिंग मतलब यहाँ पे मीनिंग ये है कि ज़्यादा बारिश की वजह से या फिर ज़्यादा हवा की वजह से द टॉप मोस्ट सॉइल्स, द रिच सॉइल दैट गो ऑफ. ओके, जनरली हिली टेरेन में आपको पाया जाता है. Okay, so which are dominated by iron oxides, quartz and highly weathered clay minerals such as kaolite, etc. पानी डालते ही ऐसे बहुत सॉफ्ट हो जाता है, पानी जाते बहुत हार्ड हो जाता है. Okay, kaolite clay. These soils are typically found on gently sloping land surfaces of great age that have been stable for a long time. And because they're highly weathered, they have low natural fertility but can be made productive through wise use of fertilizers and lime. Generally, hilly terrain में होता है because of that a wind blowing, because of that water runoff, etc. These are generally low fertile soils. Next, fifth आता है altisols. Now, these are forest soils formed in humid areas and are intensely weathered. So, they typically contain a subsoil horizon that has an appreciable amount of translocated clay and are relatively acidic. Why? Because of the decomposing forest soils. वहाँ पे vegetation, dead and decaying matter add होता रहता है, because of which they are relatively acidic. Most generally of low fertility again, but they can become productive with addition of fertilizer and lime so that that acidity can be brought down. ठीक है, next आता है alphisols. Now these are similar to altisols but less acidic and relatively young soils. So alphisols from the soil order, soil science term pedalfer, aluminium and iron इसमें rich रहता है, and they tend to be more inherently fertile when compared to altisols because they are located in the similar climatic condition, but these are less acidic in nature, typically under forest vegetation. But वहाँ पे addition जो moist रहता है ना, moisture, that would be low in these cases, that leads to alphisols. यहाँ पे aluminium सबसे ज़्यादा रहता है, iron and aluminium. Next आता है histosols. Okay, this is called also called as organic soil because it contains more than 20% organic matter and most often occurs in extreme wet areas or underwater. Histos means tissue. So it has organic matter such as leaves, mosses, grass, and the decomposition is more slow than the accumulation. The steady rate नहीं है यहाँ पे, ठीक है, remember. So this most often occurs in extremely wet areas or underwater. Thus, most of the soils are saturated year round and these are highly acidic in nature. So that's the reason histosols जहाँ पे भी होंगे, they are not at all suitable for foundations or roadways या railways. कुछ भी बनाना है उस type के soils में, they won't do that. They can't do that because they're highly unstable because of that highly acidic in nature. Next आता है हमारा aridisols. Aridic, dry, xerophytic, mesophytic areas में ये मिलेगा आपको. Here you will contain accumulation of salt, gypsum or carbonates and are found in hot and cold deserts worldwide. And if you look at these aridisols, boron, you can find it in huge quantities along with calcium. Next आता है हमारा spodosols. 9, 10, yes. These are also acidic in nature. Spodos means जो conifer trees जहाँ पे होते हैं ना, जो उनके cones या pines, needles etc. they fall.
वहां पे तुम्हें यहाँ आपको स्पोडोसॉल्स ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे. Now, spores means wood ash. They often have a dark surface underlying by ashy gray. That is because of that needles and all that are being added, see, such as needles of conifers, vegetative litter, etc. So यहाँ पे भी organic matter बहुत high रहेगा, decomposing organic matter, hence acidic in nature. These acids dissolve in iron, aluminum, and organic matter in the topsoil, and ashy gray alluvial horizons are formed. The dissolved materials then move alluviate to the colorful subsoil horizons. And यहाँ पे स्पोडोसॉल्स मस्ट ऑफन डेवलप इन कोर्सली टेक्सचर्ड सॉइल, जहाँ पे सैंड्स एंड लोमी सैंड्स सबसे ज़्यादा होंगे. मतलब उसमें सॉइल में द अमाउंट ऑफ सैंड कंटेंट वुड बी मोर. नेक्स्ट आता है मॉलिसॉल, जहाँ पे भी ग्रीन ग्रासलैंड्स होते हैं वहाँ के सॉइल्स मॉलिसॉल्स सबसे ज़्यादा होते हैं. एंड दे आर हाईली फर्टाइल, रिच इन केमिकल बेसिस सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. लैटिन में मॉलिस मीन सॉफ्ट. दीज आर ग्रासलैंड सॉइल्स दैट हैव डार्क कलर्ड सरफेस होराइजन, highly fertile and rich in chemical bases called such as calcium and magnesium. Alkalinity ज़्यादा रहता है यहाँ पे. नेक्स्ट आता है हमारा एंडीसॉल्स और एंडीसॉल्स. ना जितने भी अभी तक हमने टर्म्स देखे हैं वो सारे लिए हैं इधर ग्रीक या लैटिन से, बट ओनली दिस पर्टिकुलर टर्म हैज बीन टेकन फ्रॉम जापानीज. इन जापानीज एंडो मीन्स ब्लैक. Simple andisols or endisols, these are formed from the weathering of volcanic materials such as ash, etc., and very productive and highly fertile. These minerals have unusually high capacity of to hold both water and nutrients, making them very productive and very fertile. Okay. नेक्स्ट आता है लास्ट जेली सॉल्स, जहाँ पे भी एक्सट्रीमली हाई एलिवेशन पे परमानेंटली फ्रोजन सॉइल जो होता है, दैट ऑल फॉल अंडर दिस. इन लैटिन जेलेर मीन्स टू फ्रीज. जनरली आपको ये आर्कटिक अंटार्कटिक एरियाज में देखने को मिलेंगे. ठीक है. यस. नाउ सॉइल क्लासिफिकेशन हम लोग कल करेंगे बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट. तो इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे. अरे मैंने चेक नहीं किया क्या. ओ, क्वेश्चंस कल ही करेंगे. मैंने एक्चुअली एनिमेशंस डाला नहीं है, लगता है आपको आंसर दिख जाएगा. सो देर वोंट बी फन. टुमारो विल हैव 20 क्वेश्चंस. मैंने आज 10 क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं. टुमारो विल हैव 20 questions. Yes, now the forum is open for your queries, questions, comments on today's session if you have any. How did you find the session, etc. Yes. तो अभी तक हमने किया है soil components and then we have done the yes, what did we do? Soil orders, soil taxonomy. ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि सॉइल टैक्सोनॉमी अगर समझ में आ गया मतलब सॉइल जो सॉइल क्लासिफिकेशन है इंडिया का वो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा. इसमें 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स है इंडिया में, मोस्टली अबेंडेंट. तो सॉइल ऑर्डर्स से ही ये क्लासिफिकेशन लिया गया है. तो ये समझ में आ गया मतलब ये इजी हो जाएगा. यस. नाउ आई एम स्टॉपिंग द शेयरिंग. यस, एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज? फिर भी आज बहुत इजी. आई कैन सी दैट बिल्कुल सन्नाटे में आ गए सभी. थोड़ा सा टॉपिक उस तरह से है, बट अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड ये तो सिर्फ बेसिक है. अभी और इन डेप्थ जाएंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के बाद व्हेन वी लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल. ओके, प्रॉपर्टीज में तो और भी इन डेप्थ जाना पड़ेगा. एंड देन pH ऑफ सॉइल्स, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द pH. उसमें दैट इज प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स. उसमें तो रिक्लेमेशन, जैसे मैंने बताया ना, एमिलियोरेशन मेथड्स एंड ऑल दैट. सो बहुत सारे हैं. सो ब्रेस योरसेल्फ. यस, अभी तक ये ठीक है. मैंने आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि इसको बहुत सिंपल रखूं एंड एट द सेम टाइम रेलेवेंट एज पर योर सिलेबस एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट. बट कहीं पे भी आपको लग रहा है कि और भी ऐड होना है या फिर कुछ चेंजेस है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू लुक इनटू दैट, क्योंकि अभी अभी हमने स्टार्ट किया है कोर्स. सो वी स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम टू इनकॉर्पोरेट योर सजेशंस. यस, कोई डाउट नहीं. यस.
बिल्कुल शांति है आज। ठीक है, कोई नहीं। विल मीट टुमारो एंड विल कंटिन्यू विद दिस क्लास। ठीक है, मैं कल तक अपना टाइम टेबल भी बना दूंगी, कल तक नहीं परसों तक, क्योंकि डेली टाइम कोशिश कर रही हूँ करने की, बट अगेन इसी में उलझ रही हूँ, कंटेंट इसी में। Okay, then I'm winding up the session since I'm not getting any queries from you, and I really hope that आपको बिल्कुल समझ में आ गया है. So see you all tomorrow with the classification of soils in India. Okay, please take good care of yourself. Thank you very much once again. See you all tomorrow then. Take care. Bye bye. Good night.